तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ आयुष है, जो कि आईआईटी जम्मू में और गेट में काफ़ी अच्छा स्कोर करा है। तो चलिए सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आयुष इंट्रो। Hello everyone. My name is Ayush Srivastav. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. So currently I'm in the final semester of my BTech at IIT Jammu. So my major is in civil engineering and I have also completed my minor degree in computer science. Apart from that, so I have secured an AIR 343 in GATE 22 CS examination. And my hobbies include listening to music, watching sports, especially cricket, and reading self-development books, etc. सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं, आईआईटी जम्मू में आपका एडमिशन कैसे हुआ? So IIT Jammu mein like all engineering aspirants, like I was also preparing for JEE. अच्छा। In after 10th, I joined FIT JEE. अच्छा। So there it was a 2 year classroom program. So yeah, I gave JEE JEE mains. I secured like a 12,000 rank, and then we prepared for JEE advanced. So I wasn't able to get a very good rank, but like it was enough to get me to IIT Jammu. That was the thing. Yeah. ओके, बस जो आईआईटी एडवांस का मतलब जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था जेई का, वो बस 11th और 12th में करा था या फिर एक्स्ट्रा भी एक साल ड्रॉप लिया था? नहीं, मैंने 11th 11th और 12th में 12th हो में ही गया किया था। था। 11th 12th में ही किया था, स्कूलिंग के साथ ही किया था। अच्छा। लखनऊ में ही किया था। हाँ। तो कैसा लगा आईआईटी जम्मू? IIT Jammu is really nice. It has given me a lot of things. Like I have learned a lot from IIT Jammu. Basically, it was a new institute, so like like we can contribute to everything because like the clubs were new, and also there were a limited number of people. So like you know everyone, like सबको आप जानते हो, बहुत ही सबके साथ इंटरेक्शन है, बहुत ही एक फैमिली जैसा है। और अच्छा। सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सारे क्लब्स में आपकी पार्टिसिपेशन रहती है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ में खो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लाइक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो या आई लर्न अ लॉट। बाकी 2 साल तो कोविड में चले गए थे, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन हाँ। जितना भी मैं 1.5 2 साल कॉलेज में रहा हूँ, इट हैज बीन रियली ग्रेट। और ऑल्सो amidst the mountains, so the view is really great. The temperature, the weather बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। फिर आसपास लाइक वैष्णो देवी, हाँ। like हाँ। my friends, they after like every month, some of the students like they visit Vaishno Devi every month. So कितना दूर है वो वैष्णो भी देवी है। आईआईटी से? आईटी से लाइक जो वैष्णो देवी जाने का रास्ता होता है वो हमारे कॉलेज के बाहर से ही है। मतलब लाइक अभी ओ, कोई भी कटरा जाएगा तो हाँ। वो इधर से बाहर से ही है। तो मतलब उसके आधा एक बाद घंटा लगता होगा। हाँ, आधा 1 घंटा लगता है। फिर वहां से जो ऊपर तक आपकी चढ़ाई होती है वहां से शुरू हो हाँ। जाती है। उसके अलावा और भी लाइक धर्मशाला भी पास है यहाँ से। फिर पत्नी टॉप है जहाँ पे स्नो रहती है। हाँ। आईआईटी हाँ। जम्मू में स्नो नहीं रहती पर्टिकुलरली, मैं बता दूं। मुझे भी ये डाउट था जब मैं ज्वाइन कर रहा था। सो इट डज नॉट स्नो हेयर, बट या लाइक 2 घंटे की 2 घंटे 3 घंटे की लाइक रीजन में ऐसे हैं। 2 घंटे 3 घंटे की मतलब ऐसे टाइम में आप पहुंच सकते हो ऐसी जगह जहाँ पे लाइक स्नो होती है। तो वी हैव बीन टू दोस प्लेसेस टू। सो या इट्स अ रियली ग्रेट प्लेस है। ठीक है, अब जब हम बात करें यानी जो अभी 11th 12th में है, उन्हें कुछ टिप्स देना होगा आपको कि आईआईटी कैसे जाए, जेई मेंस एडवांस कैसे क्लियर करे, तो आप कौन सा टिप्स दोगे उन्हें? मेंस और एडवांस में तो देखो ये है कि दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। अच्छा। मेंस के लिए अगर आप अगर सेपरेट कर सको कि मतलब किसके लिए तैयारी करनी है तो बहुत ही अच्छा है। पर हाँ। अगर नहीं भी है तो मैं ये कहूंगा। लेकिन जैसे एडवांस में तो अगर आप एडवांस में तो यही है कि अगर एडवांस में आपके 2 सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं, आप अगर दो हाँ। सब्जेक्ट से फोकस करो। अगर आप एडवांस आपका वो है टारगेट, तो आप 2 सब्जेक्ट से फोकस करो, उनमें आप बेस्ट लेने की कोशिश करो। एक में अगर आप थोड़ा एवरेज भी होगे तो चलेगा। कई बार हम उस समय क्या करते हैं, हम तीनों में बेस्ट होने की कोशिश करते हैं, या फिर हाँ। हम सोचते हैं हमारा वीक है तो हमारा नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है। होता है, उस पर भी मिल जाते हैं कई। उस समय हम लोग को ये पता ही नहीं होता है एक्चुअली ये चीजें। तो ये एडवांस के लिए रहेगा। बाकी बाकी वही है, मतलब उस समय काफी डीमोटिवेशन डिस्ट्रैक्शन रहते हैं। तो वो जितना आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली चीज है। हेलो या हाँ। हाँ। तो अब बात करते हैं गेट के बारे में। तो गेट का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करा था? गेट का सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन Jan 2021. Like previous year, I started my journey. So it was like the time between fifth and sixth semester when I हम्म। started my journey. So during my fourth and fifth semester, I realized that I wanted to CS like degree in CSE. So I realized that I was enjoying those subjects more, and also like I was less interested in civil subjects. So that was the time I realized that I wanted to do something. I wanted to shift to CS side. So then, but coming from a civil engineering background, getting into top product based companies directly, हाँ। it's a little difficult. And also at that time, I did not want to do a job like today. Also, like
most of my friends are doing jobs, some are going for studies, but like majority of the people are doing jobs, but I do not want to do a job as of now. Okay. I realized that I could study more. So I explored my options, and since I wanted to study CS, that's why like MTech CSE was the best option for me. It also like I realized that it would also help me strengthen my CS fundamentals. Yeah, that's why I opted for MTech CSE. So that's how it started, like in Jan 2021. तो टाइम टेबल क्या था आपका गेट का? Timetable. So like I said, the GATE preparation journey is a 1 year journey. एक हम्म, एक साल आपको कंसिस्टेंटली रेगुलरली 4-5 आवर्स देने हैं अपनी प्रिपरेशन में, 4 5 लाइक ड्यूरिंग द hours. एंड मंथ. हाँ, डेली. आखिरी के मंथ्स में आप 8 to 9 आवर्स, या आखिरी के मंथ में तो ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम होता है तो आप ज्यादा देते हो, एट हाँ, टू नाइन आवर्स हो जाएगा. बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स लाइक 4 to 5 आवर्स, बट कंसिस्टेंटली देना है. हाँ, सो यही है. 3 पार्ट्स होते हैं गेट की जर्नी में, कोई भी अगर आप स्ट्रीम से दे रहे हो. पहला होता है सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा रिवीजन, और तीसरा मॉक टेस्ट देने वाला होता है. तो सिलेबस कंप्लीशन जो ऑप्टिमल टाइम होता है करने का, वो अक्टूबर नवंबर होता है. आपका सिलेबस नवंबर तक हो जाना चाहिए, नवंबर तक मैक्स हो जाना चाहिए. फिर रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट. हम्म, सो आई स्टार्टेड माई रिवीजन इन ऑगस्ट. लाइक अगर आप उससे पहले से कर सकते हो तो इट्स इवन बेटर, बिकॉज इन ऑगस्ट लाइक इट हिट मी that I have completed 3-4 subjects, but I hardly remember any one of them. It was like I was studying new and new subjects, but I wasn't remembering any of the old subjects. So I started revision from August, and yeah, so during August to November, I was studying new subjects as well as I was revising the old ones. And so August to December, you revise, and then in January, you will give the mock test or test series, and you have to analyze the mistakes, like how much you can better yourself. It depends on that. So in Jan, you give the test series. So basically, there are 3 parts. And also during the revision phase, you will also prepare short notes, which will help you during the month of Jan, when you will be giving the mock test, then to analyze them and to correct your mistakes. Like in the like mock test, it is said that, or like what हम्म, I followed, it was like you give mock test every alternate day. So you can give a mock test like around 15 mock tests in the month of Jan. Uh, yeah, around 15 mock tests. So like between mock tests, you get only one day. So what you can do is you can analyze the mistakes and then you can correct them. So main revision, like what you do in August to December, it is the main notes which you should revise. So you need main notes plus short notes also. 3 stages, as I said: syllabus revision, which is the most important thing, and the mock test. That's it. आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? आईआईटी वो करना है, पीएसयू Hello. जाना है या? हेलो, हाँ, yeah, yeah. फ्यूचर प्लान्स क्या है? आईआईटी से एमटेक करना है या फिर पीएसयू? Uh, अच्छा, मेरा, हाँ, तो लाइक एज आई सेड, लाइक पीएसयू, क्योंकि मेरी बीटेक सिविल में है, बिकॉज बीटेक इन सिविल, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीएसयू. So I'll be doing my MTech in CS. Also, as I said, I wanted to study CS because, like, that's what I feel now, that I should study more. So I'll be doing my MTech in CSE. अच्छा, तो किसी को टिप्स देना हो तो क्या दोगे आप? Tips, हाँ, टिप्स यही है कि देखिए, स्टिक टू अ प्लान. लाइक जब भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो स्टिक टू अ प्लान एंड डू नॉट कंपेयर इट विद एनीवन एल्स. Like I was following a coaching, I was following a GATE applied CSE coaching. So like for if I take a single subject, suppose operating system, so there will be a 38 hours of video content. हम्म, So what I did was, I had decided that every day I will watch 2 hours of video content. I used to watch 2 hours of video content and make my notes. So it took me around 4 hours or 4 to 5 hours daily to do that. So yeah, that was my plan. Like if I do 2 hours every day, 2 hours, I will finish 2 hours of content every day. So it will approximately take me 19 to 20 days to finish one subject. So you should have already planned that what month, what subject you are going to finish. Everything should be planned. In this week, I'll be finishing this much content. In this month, I'll be finishing this subject. I will revise this subject. I'll be giving practice test of this subject. So everything should be planned. So as long as your plan is such that you are finishing the syllabus by November, it is good. Do not compare it with anyone else. There will be droppers. There will be people who will be doing jobs. So you need your own plan. So just understand yourself and follow that plan. Then during the period of September to November, just don't skip revision. It is very boring, and I know that it's not very interesting also. But you have to do that, and that is what makes you deserving of a good rank. So just do the revision, like you have to do it. Revision, there is no other way to get a good rank. You have to revise it. Coming to the mocks, just
try to make the environment as much as gate while giving mocks. So suppose your gate examination is 2 to 5, so 2 to 5, so try to give mocks at that time only. It will be very beneficial. Also, do you just a minute. हाँ. So I was saying that also the mocks, yeah. So mocks give at only that time, like the gate time only. For example, if अच्छा. your gate paper is scheduled at 2 to 5, then give the mocks at also at that time. Also during the end months, keep your health good. Take care of your health. That is also very important because otherwise, like you maybe you have prepared for one year, but if your health is not good during the last few days, then there's no use, right? So yeah, take care of that. Then also you should plan that what you will be doing on the last 15 days before the examination, because you will be given so much of content, but obviously the days are limited. So what you should do, like as per what I know, what I have done and what I've heard from the educators, what you should be doing during the last 15 days, you should revise the your main notes. Plus, you should be solving those previous year questions which you couldn't solve in the when you tried to do in the first time. So they will, like, you will be solving the previous year question in the month of December. Just yeah, for the gate examination, one thing more, that please do the previous year questions as much as possible, because the questions, they are not, the pattern remains the same. The questions are not repeated, but the type of question remains the same. So like you will be doing the previous year questions in the month of December. So some questions you will not be able to do, or the hard questions you will mark them and revise them 15 days before the examination. So 15 days before the examination, you have to revise the main notes. Plus, you have to tackle those questions which you could not do in the first attempt. So that is one thing. Apart from that, during the journey, since it's a 1 year long journey, I will say that you will feel frustration. Plus, at times you will feel alone. Just do not let it, do not allow them to control you, I would say. Just feel those things, allow them to go, and just focus on your plan. Whatever you plan have, that you have to study 2 hours this day, or you have to do revision on that day. So just go with that. It will be hard, but do not allow your emotions to overpower you. Do not allow them to control you. Just, but there will be difficult times, but those people who only go through the difficult times and continue studying, those are the ones who get a good rank. So just remember that you deserve a rank only because when you felt frustrated, that time also you kept studying, right? So yeah, so that's the thing, yeah, mostly. ओके, तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं. Sure, sure. तो वीडियो को एंड करते Thank हैं you. यहीं पर. Thank you, Suraj. Thank you. Thank you.